I'm very happy to introduce today's resource person. For this session, we have the faculty member from our institute only, Professor Uddhav Tukaram Bhandare. He is the head of Department of Hindi, and sir also is captain of NCC unit. And for regarding the profile of the Bhandare sir, it's very vast. So I will going to highlight few points of the Bhandare sir profile. That is, sir has completed University Grant Commission major research project, which is 10 lakh rupees grant sir received, and sir has successfully completed his major research project grant given by the University Grant Commission. Then sir also completed 2 minor research projects from University of Mumbai. Sir is also author more than 8 books and more than 25 articles in national and international journals. Sir is PhD guide of Department of Hindi. We have a center for Department of Hindi, and under his able guideship, right now 4 PhD students are doing PhD, and one is going to submit his PhD in a very short period of time. So sir अभी हिंदी में बात करेंगे क्योंकि सर हिंदी डिपार्टमेंट से है, तो मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको सबको, अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज आप पूछिएगा बीच बीच में। अगर किसी को हिंदी समझ में नहीं आई या किसी को कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप पूछ सकते हो। तो ट्रांसलेशन का जो पार्ट है वो एक थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं कि अब इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो हम बता सकते हैं। और सर का लेक्चर रिसर्च एंड इथिक्स के ऊपर होने वाला है, जिसकी सर ने खूब तैयारी की है, और हमने बहुत दिनों से हम सर के पीछे लगे कि सर कुछ भी कीजिए और हम आपका एक लेक्चर हमें अरेंज करना ही करना है। तो सर को आप सुनने के बाद आपको पता चला कि एक्चुअल रिसर्च और इथिक्स होता क्या है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप सेशन चालू कीजिए। मैंने आपको को-होस्ट बना दिया है, आपके पास पीपीटी रहेगा तो आप शेयर भी कर सकते हो, और कुछ मदद लगे, बीच में कुछ टेक्निकल मदद लगी तो मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। तो आपको रिक्वेस्ट की आप सेशन चालू कर दीजिए। आपका माइक। यस, थैंक यू सर। ओके, धन्यवाद सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंगुकाना ठाकुर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय के अध्यक्ष माननीय अरुण सेठ भगत साहब, उपाध्यक्ष YT देशमुख साहब, इस संस्था के चेयरमैन माननीय रामसेठ ठाकुर साहब, सचिव डॉक्टर ST गर्दे सर, प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर SK पाटिल सर, इन सब के सहयोग से और रमाकांत नवगरे सर ग्रंथपाल, इनके प्रयास से PhD के विद्यार्थियों के लिए आज ये कोर्स वर्क पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। मुझे आज अच्छा भी लगा, इसलिए अच्छा लगा कि इसी महाविद्यालय में एकेडमिक्स को लेके ऑनलाइन माध्यम से क्यों ना हो, ऑफलाइन माध्यम से देखा जाएगा। बड़े मन से स्तुति की कि वह भंडारे सर ने ये एक कार्य किया हुआ है। दूसरी बात यह है कि बहुत दिनों के बाद रिसर्च के ऊपर, अनुसंधान के ऊपर बात करने का मौका मिला है। अनुसंधान करने का मौका तो मिला, रिसर्च करने का मौका मिला, लेकिन इसके नियमों के ऊपर दूसरों के सामने अपनी बातें रखने का मौका कभी नहीं मिला। आज पहली बार हमारे महाविद्यालय के ग्रंथपाल डॉक्टर नवगरे सर ने, रमाकांत नवगरे सर ने मुझे दिया है। मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं।
और बहुत सारे प्राध्यापक हमारे ही महाविद्यालय के अलग अलग विभाग से संबंधित भी हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। मेरा आपसे यही एक विनम्र विनती है कि इसे अन्यथा न ले, क्योंकि बोलते समय कुछ चीजें निकलती हैं, तो निकलने के बाद कुछ अन्यथा इसको न समझें। मेरे आत्मीय पीएचडी के सभी शोधार्थी, चाहे किसी भी विषय के हो, किसी भी विभाग के हो, मैं डॉक्टर उद्धव भंडारे, प्रोफेसर, चंगुकाना ठाकुर कला वाणिज्य विज्ञान महाविद्यालय, नवगरे सर ने आपसे परिचय मेरा करवा दिया। मैं आज आपसे एक विषय पर विस्तार के साथ नहीं, बल्कि दिए हुए समय सीमा में रहकर विचार विमर्श करना चाहता हूं। जो शोध के क्षेत्र में पीएचडी कोर्सवर्क के रूप में अत्यंत उपयोगी है, माना तो नहीं, माना तो किसी के लिए भी उपयोगी नहीं है। हर एक उपयोगी होती है। जो चीज मुझे आवश्यक है किसी और के लिए उपयोगी ना हो, और मुझे जो उपयोगी है उस दूसरों के लिए अनुपयोगी हो, तो ये कोर्स की दृष्टि से उपयोगी भी है, लिया तो कोर्स की दृष्टि से उपयोगी भी नहीं है अगर नहीं लिया तो। ये बात उस रिसर्चर के ऊपर निर्भर करती है, उस अनुसंधानकर्ता के ऊपर निर्भर करती है। और आज का मेरा विषय है शोध और प्रकाशन की नैतिकता, इथिक्स इन रिसर्च एंड पब्लिकेशन। इसे संक्षिप्त रूप में ईआरपी भी कहा जाता है, इथिक्स रिसर्च एंड पब्लिकेशन, ईआरपी। सबसे पहले सामान्य से सामान्य बात तक आपको मैं लेकर जाना चाहता हूं। मैं ऐसी बड़ी बड़ी किताबों से कई चीजें ढूंढ कर इकट्ठा करके मैं आपके सामने रखना नहीं चाहता, क्योंकि मैं जमीनी आदमी, ऑन ग्राउंड का आदमी हूं, और ऑन ग्राउंड पर जो जो दिक्कतें मुझे आई, मुझे जो जो परेशानियां हुई, और आज अनुसंधान करते समय तो आई, लेकिन करवाते समय क्या क्या परेशानियां होती हैं और विद्यार्थियों को वो बातें बतानी पड़ती है, वो आपके सामने रखने का प्रयास करूं। ऐसे कुछ बड़ी चीजें मैं आपके सामने लाकर रखने वाला नहीं हूं, ताकि आपको समझ में ना आ सके। एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी नैतिकता की अवधारणा को किसी न किसी रूप में समझता है, और जाने अनजाने में उसे जीता भी। नैतिकता कोई किसी एक व्यक्ति ने ही पालन करनी चाहिए या एक क्षेत्र के व्यक्ति ने ही उसका अमल करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। हर एक व्यक्ति, हाँ, उसकी मात्रा कम ज्यादा हो सकती है, उसका प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन हर एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से अपने जीवन में इस नैतिकता की अवधारणा को अपनाता है, उसके साथ जीता है।
क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसके विवेक को ही हम नैतिकता कह सकते हैं। इतना तो हमको समझता है। विवेक एक शब्द है, बहुत बड़ा शब्द है। उसको इंग्लिश में अगर बोल दिए तो बड़ा शब्द लगता है, लेकिन हिंदी और मराठी में अगर सुनते हैं तो बहुत छोटा लगता है। लेकिन ये विवेक शब्द, इसका विस्तार से मैं आगे बताने का कोशिश करूंगा विवेक को लेकर। लेकिन इस नैतिकता को ही विवेक कहा जाता है। लेकिन यही नैतिकता शोध के संदर्भ में न केवल अपने विवेक, बल्कि बुद्धि, समझदारी, ईमानदारी, ये शब्द बहुत बड़े हैं शब्द। इसका विस्तार बहुत हो सकता है, लेकिन विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं मैं। एक एक शब्द का विस्तार अगर और उदाहरण एग्जाम्पल देता रहूंगा तो बहुत परेशानी हो जाएगी। समझदारी, ईमानदारी, मानवीय भावधारा और शोध कार्य की प्रामाणिकता की मांग करता है। हम ये देखते हैं कि शोध कार्य तभी नैतिकता या रिसर्च इथिक्स के मानदंडों पर खरा उतरेगा जब आप उसकी ईमानदारी से, दक्षता पूर्वक, पारदर्शी तथ्यों और विवरणों के साथ प्रस्तुत कर पाएंगे। यहां पर अभी मैं दो शब्दों का प्रयोग करूंगा। जो रिसर्च करने वाले हैं, कुछ अभी अभी रिसर्च कर रहे हैं, जिनका होने आया है लेकिन कोर्स वर्क पूरा नहीं हुआ इसलिए आए होंगे, जो अंतिम पड़ाव पर हैं उनको, वो अनुभवी हैं, जो शुरुआत हो गई वो अनुभवी हैं, ऐसा समझा जाएगा। लेकिन इतना याद रखना कि आपका अनुसंधान जो है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, वस्तुनिष्ठ मीन्स ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसके साथ ही आपका अनुसंधान व्यावहारिक भी होना चाहिए। व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल होना। ये दोनों चीजें आपके रिसर्च के अंतर्गत होनी बहुत जरूरी है। लेकिन एक बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि ये करते समय सिद्धांत की बात हो, सिद्धांत के ऊपर अपने आडिंग भी रहे, हिले नहीं, स्थिर रहे। लेकिन मतांतर की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। विचार, दूसरों के विचारों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे फेवर में बोल रहा है, मेरे पक्ष में बोल रहा है, तो ही वह अच्छा है, और मेरे दोष दिखा रहा है, मेरे विपक्ष में है, तो वह मेरा विरोधी है। रिसर्च में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं होती। अनुसंधानकर्ता के सामने दोनों प्रकार के व्यक्ति मिल जाएंगे, मतांतर के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। सिद्धांत की बात हो, इसमें कोई दुमत नहीं है। इसकी ये मतांतर की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। कोई अगर बोल रहा है कि अरे यार तुम्हारे रिसर्च में थोड़ी कमियां मुझे दिखाई दे रही है, मैंने तुम्हारा रफ ड्राफ्ट देखा, उसको सुधारने की मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने नहीं किया, लेकिन आप एक बार दोबारा से पढ़ लेना इसको और उसको दुरुस्त करने की कोशिश करना। ये मतांतर हो गया, विचारों का आदान प्रदान हो गया। अब लेने वाला जो है किस दृष्टि से लेगा, वो उसका सिद्धांत है, उस सिद्धांत के ऊपर जाएगा या दूसरे के मत के लिए भी तवज्जो देगा, उसकी अवहेलना नहीं करेगा, इसका पालन करेगा, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मैं चाहता हूं सिद्धांत की बात हो, लेकिन दूसरों के मत की अवहेलना भी नहीं होनी चाहिए। ये रिसर्चर ने हमेशा रिसर्च करते समय ध्यान में रखना जरूरी है।
आवश्यक है। आपके शोध कार्य से किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत हानि नहीं होनी चाहिए, उसको व्यक्तिगत ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, किसी की निजता के ऊपर प्रहार नहीं करना चाहिए, उसकी प्राइवेसी के पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का अपमान जानबूझकर नहीं करना चाहिए। मैंने जो कहा इस बात को आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। यदि इन बातों का आपने अगर पालन किया, मैंने जो ऊपर इसके पहले 2-3 बातें बताई, 2-3 शब्द बताए, अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, अवहेलना नहीं होनी चाहिए, बराबर है, दूसरों की बात, दूसरों का अपमान नहीं होना, जानबूझ के अपमान नहीं करना चाहिए। ये जो 2-3 बातें बताई मैंने आपको, इसका अगर आपने पालन किया रिसर्च करते समय, केवल अनुसंधान करते समय, तो आपके लिए ये पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन इन बातों का अगर आपने पालन नहीं किया तो समझ लेना कि आप प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो, शोध नैतिकता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये माना जाए अनुसंधान करते समय। इसलिए इन चीजों का आपने अनुसंधान करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैं 3 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा, बहुत जरूरी है। रिसर्च करते समय आपने इसका समय समय पर उपयोग अगर किया, वो दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के पास भी अगर आपका रिसर्च चला गया तो आपको कोई परेशानी का सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें से नंबर 1 बात है, वह है मानवता का पक्ष। नंबर 2 है शुद्धता पर विश्वास, और तीसरा है निरक्षीर विवेक। ये 3 चीजें, इन 3 शोध नैतिकता, ये 3 शोध नैतिकता की आधारशिलाओं के समान है। ये शोध नैतिकता के लिए ये आधारशिला के समान। अगर शोध की नैतिकता का पालन करना, इथिक्स का पालन करना है, तो ये 3 चीज आपको अपनानी पड़ेगी। नंबर 1 मानवता का पक्ष, दूसरा शुद्धता पर विश्वास, और तीसरा निरक्षीर विवेक। आगे मैं इसका विश्लेषण करना नहीं चाहूंगा या उदाहरण देना नहीं चाहूंगा या लंबा इसको खींचना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोगों को मालूम है, क्योंकि आप कोई प्रोफेसर है, कोई विद्यार्थी अवस्था में भी है, लेकिन पीजी उसका हुआ, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये 3 चीजें, इन 3 चीजों का आपने पालन करना चाहिए रिसर्च इथिक्स के अंतर्गत। आपको समझना यह भी चाहिए कि अनुसंधान का उद्देश्य ज्ञान की ज्ञात अज्ञात बातों और छवियों का उद्घाटन एवं प्रचार प्रसार करना होता है। उससे किसी न किसी रूप में मानवता की भलाई का संदर्भ जुड़ा अवश्य होता है। इसलिए हम याद रखें कि हमारे शोध कार्य से किसी भी रूप में मानवता का या किसी मनुष्य का, जीव जंतु का, पर्यावरण का हमारे रिसर्च की वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन आजकल के रिसर्च किस प्रकार के होते हैं, किस प्रकार हम करते हैं, इससे अच्छी तरह से वाकिफ है, मैं भी वाकिफ हूं। प्राध्यापक लोगों को इतने काम होते हैं। आज भी मैं जो सुन रहा हूं या बोल रहा हूं, सभी के सभी प्रोफेसर या सभी के सभी विद्यार्थी सुन पा रहे हैं या नहीं मुझे नहीं मालूम। सामने होते तो उसका रिएक्शन मुझे पता चलता कि हाँ यार
मेरा ये सुन रहा है, जैसी तकलीफ प्रोफेसर को ऑनलाइन टीचिंग करते समय हुई, उसी प्रकार की तकलीफ आज मुझे ये समझाते समय वही आ रही है कि काश आप सामने होते तो आपका रिएक्शन पता चलता कि मैं जो बोल रहा हूं वो आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। लेकिन अब तक जो मैंने जो बताया, आपको इंट्रोडक्शन बता दिया कि बाबा इथिक्स क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, उसका अर्थ मैंने बता दिया। अभी रिसर्च के अंतर्गत भी जाना है आपको और पब्लिकेशन के अंतर्गत भी जाना है, उसकी भी बहुत कम बातें समय को ध्यान में रखते हुए मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब नैतिकता अगर समझ में आ गई आपको, एथिक्स समझ में आ गए आपको, तो उसको अभी अब दो चीजों के साथ जोड़कर देखना चाहिए। एक है अनुसंधान और दूसरा है किए हुए अनुसंधान का पब्लिकेशन, प्रकाशन। इन दोनों के साथ अगर नैतिकता आपने अच्छी तरह से निभाई तो समझ लेना कि आपके अनुसंधान के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन अगर ऐसा होने के बावजूद भी अगर उंगली उठाई तो क्या? तो उसके भी दो उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करूं। मैंने सभी इथिक्स का पालन किया, इसका भी एक आदर्श उदाहरण मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। शायद आपको मालूम भी होगा लेकिन याद नहीं आता, वो बताने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं उसमें 4-5 बातें बताऊंगा, किसमें, अनुसंधान में, और 4-5 बातें ही मैं बताने की कोशिश करूंगा पब्लिकेशन में, क्योंकि मुझे नवगरे सर ने अप्रत्यक्ष रूप से फोन करके बताया कि भाई जी, प्रोफेसर जी, आप समय का ध्यान रखिएगा और बच्चों प्राध्यापकों के साथ बात कीजिएगा, तभी जाकर समय में वो बिठा पाएंगे, नहीं तो फिर परेशानी हो जाएगी, क्योंकि मेरा अगला सेशन भी है, उसको भी शुरू करना है। तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि थोड़ी थोड़ी बातें ही बताने की कोशिश करूंगा, एक ही लेक्चर में 1 घंटे में सभी पब्लिकेशन एंड रिसर्च के इथिक्स के ऊपर बात करना असंभव है। इसी चीज को मैं अलग एंगल से भी बता सकता हूं। ये चीज मैं आज बता रहा हूं या अभी बता रहा हूं, इसी बात को दूसरी पद्धति से भी बता सकता हूं, लेकिन सबसे पहले मैंने लिया वो नैतिकता क्या है, इसको समझ लेना। इसी नैतिकता को पब्लिकेशन और अनुसंधान इसके साथ जोड़ के देखिएगा। उसमें से पहली बात ध्यान रखनी योग्य है नैतिकता के रूप में, अपना अनुसंधान ईमानदारी के साथ। काश अगर ये होता तो नवगरे सर को क्या बोलते हैं, कौन सी मशीन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नवगरे सर हैं क्या? सर हो, बोलिए। हाँ, कौन सी मशीन ली है आपने वो चेक करने का प्रतिशत, कॉपीराइट? हाँ, एंटी प्लैगियरिज्म सॉफ्टवेयर है हमारे पास उर्कुंड का। हाँ, ये अगर ये इस इथिक्स के ऊपर बात करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण है, इसलिए प्लैगियरिज्म का मशीन लेना पड़ा, नवगरे सर को अपनी लाइब्रेरी में रखना पड़ा। यानी इसका अर्थ है कि कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है, गलत चीजें हो रही है। इसके ऊपर रोक लगेगी या नहीं वो मुझे हमको मालूम नहीं, रोक लगे, थोड़ा बहुत बंधन लगे, ईमानदारी से काम करे, इसलिए इस इथिक्स का पालन करना जरूरी है। जैसे हमारे जीवन में हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस नैतिकता का पालन करते, अपने बच्चे को बताते, अरे थोड़ी तो ईमानदारी से काम करो यार, ऐसा बोलते हैं बच्चों को, सही काम करो, सही रास्ते पर चलो, गलत राह पर न निकलो, उसकी मंजिल बहुत कम होती है गलत रास्ते की। ये हम हर दिन बच्चों को समझाते रहते हैं, विद्यार्थियों को समझाते रहते हैं। यही तो नैतिकता है, जो विद्यार्थियों के लिए लागू होता है वही हमारे लिए लागू होता है, और जो विद्यार्थी और हमारे लिए लागू होता है वही अनुसंधान के लिए लागू होता है। तो
अपना अनुसंधान जो है सत्योन्मुख होना चाहिए, उसमें सत्य होना चाहिए। इसका झुकाव जो है अनुसंधान का सत्य की तरफ ज्यादा होना चाहिए। इसका मुखड़ा, मुखड़ा ने मुख, मेरे अनुसंधान का भी एक मुखड़ा होता है, कि उसका रूप क्या होगा इसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन याद रखना अनुसंधान का भी एक मुखड़ा होता है। उसका मुखड़ा जो है सत्य की तरफ होना चाहिए। अनुसंधान जो है, रिसर्च जो है त्रुटि रहित हो, दोष रहित हो। त्रुटियों को लेकर समझौते की मनोवृत्ति कदापि मान्य नहीं है। चलता है थोड़ा बहुत भंडारे सर, नवगरे सर जरा प्रतिशत कम कर दीजिए ना आर्टिकल का, मशीन को थोड़ा कुछ बोलिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन देखता है आजकल, किसको समय है? इस तरह की मनस्थिति, इस तरह का विचार मन में रखना भ्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। ये रिसर्च के क्षेत्र में इन चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। चलता है, चलने दो, थोड़ा बहुत है, अगली बार देखेंगे, अगली बार नहीं करेंगे, इतनी बार माफ कर देना, इसके लिए कोई जगह नहीं। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो समझिए कि आप नैतिकता का अतिक्रमण कर रहे हैं, इसका वायलेट, नैतिकता का वायलेट कर रहे हैं। आप रिसर्च इथिक्स को, इसे भली भांति आपको समझना चाहिए। हम सुपरविजन करते हैं, एक थोड़ा छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम सुपरविजन करते हैं, बच्चे ने 2-3 साल के बाद अभी इस सेमेस्टर के अंतर्गत ऑफलाइन में सुपरविजन करने का मौका मिला। सुपरविजन करते हैं, एक हम बच्चा आगे पीछे देखता है तो हम उसको टोकते हैं, उसका पेपर निकाल के लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको नैतिकता हमको सिखानी है, उसको सही रास्ता दिखाने की हम कोशिश करते हैं। बाबा तू नैतिकता को जहन में रख के अपना पेपर लिख ले, धोखा मत दे, अपने आप को भी और अपने डिग्री को भी धोखा मत दे। इस प्रकार की बातें हम उसको बताने की कोशिश करते हैं। तो वही बात अपने लिए भी लागू होती है, चाहे 10% हो, 20% हो, 15% हो, 5% हो। अगर गलती है, अनैतिकता है, अनैतिकता है, इसका अर्थ है कि हमारा अनुसंधान जो है सत्योन्मुख होना चाहिए। अपने अनुसंधान का रुख जो है या मुखड़ा जो है सत्य की तरफ होना चाहिए। एक बात आप ध्यान में रखिए, अनुसंधान करते समय बहुत परेशानियां होती है, बहुत किताबें छान मारनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, और विचार करके जब सो जाते हैं, सोने के बाद जो पड़ा हुआ है वो अपने जहन में हिलने लगता है, कौंधने लगता है। उसी के ऊपर अपने शब्दों में हम अपने विचारों को बांधना शुरू कर देते हैं। आप एक बार करके तो देख। लेकिन दुख की बात यह है, मैं उतना जोर देके नहीं बता सकता हूं आपको। पहले होता था, हम करते थे, पढ़ते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन आजकल प्रोफेसर लोगों के लिए भी पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है, लाइब्रेरी में जाने के लिए समय नहीं मिलता है, किताबें छान निकालने के लिए समय नहीं मिलता है। लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश मैं करता हूँ। लाइब्रेरी में किताब है, बहुत अच्छा, मेरे पास किताब है, बहुत अच्छा। अगर नहीं मिली तो मैं अमेज़न के ऊपर से नवगरे सर को मंगवाने के लिए बोलता हूँ, या वो किसी और को बताते हैं और वो उपलब्ध मुझे करवाते हैं। वो मेरी पढ़ने की भूख है, इसको मिटा दो, तो वो मिटाने की कोशिश करते हैं। तो इसका अर्थ है कि हमारा अनुसंधान का, हमारे विचार करने का मुखड़ा जो है सत्य की तरफ है, असत्य की तरफ नहीं। इतना तो 4 लोग देखने वाले, 4 लोग सुनने वाले हमारी तरफ देखकर ये अवश्य कहते हैं। भले आपको आज उसको अच्छा न लगता हो, मेहनत लगती हो, परिश्रम लगता हो, कष्ट लगता हो, लेकिन 4 लोग जब आपको देखते हैं तब उनका देखने का नजरिया इसकी वजह से, इस सत्य की वजह से बदल सकता है। ये बात आप ध्यान में रखना। वही बात रिसर्च के अंतर्गत भी होती है। ये पहली बात हो। दूसरी बात है, इसके अंतर्गत मूल निष्ठा होनी चाहिए। ये
अनुसंधान का अपरिहार्य गुण है, आवश्यक गुण है, जिससे कोई कार्य शुभ रूप में सत सके। ये सत शब्द है, सत यानी ग्रहण करना, प्राप्त करना, जिससे अपनी और दूसरों की भलाई हो। अनुसंधान से केवल अनुसंधान का कर्ता का भला नहीं होता है। मैं एक ही उदाहरण अभी 2 जगह पर देने वाला हूं, यहां पर भी देने वाला और आगे भी एक बार आने वाला है। अपने अनुसंधान से, अपने रिसर्च से, रिसर्च करने वाले को ही फायदा होता है ऐसा नहीं है। इंक्रीमेंट बढ़ जाता है, परमानेंट होता है, ऐसी बात नहीं है। रिसर्च करने के बाद अगर सभी नैतिकताओं का पालन किया हुआ है तो आपके रिसर्च से समाज का भी कल्याण होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। आपको एक उदाहरण बताता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, जिन्होंने पीएचडी का थीसिस जमा कर दिया। जमा करने के बाद जो पढ़ने वाले हैं, रिसर्च थीसिस, शोध निबंध पढ़ने वाले हैं, उन्होंने पढ़ा। पहले पढ़ते थे, थीसिस पढ़ते थे, आज समय नहीं है किसी को पढ़ने का। निदेशक को भी और परीक्षक को पढ़ने का समय नहीं मिलता। 1200 पेज, 1400 पेज का एक एक थीसिस बनता है। ये कैसे के थीसिस होते हैं, छोटा सा थीसिस। लेकिन ऐसा हो कि, तो किसी कवि ने कहा है, देखने में छोटा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अपना रिसर्च छोटा हो गया तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ा होना चाहिए, उसके पेज ज्यादा होने चाहिए, ऐसी बात नहीं होती। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने शोध निबंध सबमिट कर दिया, और उस समय ऐसे थीसिस पढ़ा करते थे शोध परीक्षक, और उन्होंने उनका शोध निबंध पढ़ा। पढ़ने के बाद उसमें एक शोध आर्टिकल चैप्टर था शोध का, उस शोध आर्टिकल का पीएचडी के शोध का विषय केंद्रीकरण, ऐसा हिंदी में है। इंग्लिश में आपको मालूम होगा, बराबर है, लेकिन हिंदी में भी सुनने का या समझने का प्रयास कीजिए। जो उन्होंने कहा कि बाबा अंबेडकर जी, इसमें से ये विकेंद्रीकरण वाला और बैंक से संबंधित जो प्रकरण है, इसको आप निकाल दीजिए। तो अंबेडकर तो भारत से गए थे, आर्थिक परिस्थिति उतनी प्रबल नहीं थी, स्कॉलरशिप लेके गए थे। एक झटके में बोल सकते थे, अगर मुझे डिग्री नहीं मिल रही तो यार मेरा समय चला जाएगा, शिष्यवृत्ति चली जाएगी, चलो निकाल दो वो प्रकरण और डाल दो कुछ ना दूसरा कोई प्रकरण और मुझे डिग्री दे दो, बोल सकते थे। लेकिन मूल निष्ठा अपने रिसर्च के साथ उन्होंने बोला, मैं वो प्रकरण नहीं निकालूंगा। आपका परीक्षक होने के नाते सजेशन दिया, मतांतर में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे सिद्धांत जो है, आपके मत की मैं अवहेलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा नहीं। तो बहुत समय बीच में गया, थीसिस वैसे ही रहा, लेकिन बाद में परीक्षक बिहार गया और उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और उनको अवार्ड मिल गया, डिग्री मिल गई। लेकिन बाद में उसी एक चैप्टर के ऊपर भारतीय आरबीआई की स्थापना हुई, उन्हीं नियमों के आधार पर। याद रखना, यह है मूल निष्ठा रिसर्च के प्रति, अपने विचारों के प्रति, अपने सिद्धांत के प्रति, जिसको उन्होंने वो नकार रहे थे,
उसी रिसर्च के ऊपर भारत देश की आरबीआई का खाका तैयार किया गया, भारत के सभी बैंकों की नियमावली तैयार की गई, भारत की अर्थव्यवस्था की नसें भारत के कोने कोने तक उसी एक आर्टिकल के ऊपर, उसी एक प्रकरण के ऊपर चली गई। ये कम बात रिसर्च, यानी रिसर्च केवल जो रिसर्च कर रहा है उसके लिए ही फायदेमंद होता है ऐसा नहीं है, दूसरों के लिए भी उसका बहुत फायदा होता है, समझने के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए, बौद्धिक आकलन के लिए। इसको ही हम मूल निष्ठा कह सकते हैं। तीसरी बात है संतुलन, यानी समन्वय जिसको बोला जाता है। आजकल घर में 5 भाई है, 2 भाई है तो उनमें संतुलन नहीं है, पति पत्नी है तो संतुलन नहीं है, भाई बहन है तो संतुलन नहीं है, एक स्कूल में 4 प्रोफेसर है तो संतुलन नहीं है, एक ऑफिस में 20 लोग हैं तो संतुलन नहीं है, एक कॉलेज में 100-150 लोग हैं तो संतुलन नहीं है। ये रिसर्च वाला संतुलन, समन्वय है। लेकिन रिसर्च ये आपको समाज में रहकर ही करना पड़ता है, इसलिए दूसरे मनुष्य के साथ संबंध आना जरूरी है, आता ही है। ये करते समय बहुत बार गाइड के साथ कभी कभी तू मैं हो जाता है। अब किसी से को लेकर बातचीत हो जाती है, अब रिसर्चर ने करना क्या चाहिए, वहां पर यही शब्द आपको काम आएगा, वही नियम या काम आ जाएगा, वही इथिक्स काम आ जाएगा। एक है संतुलन या समन्वय रखना जरूरी है, ये बात आप ध्यान में रखना। कभी कभी क्या होता है, हम विद्यार्थियों से रिसर्च करवा कर लेते हैं और ये कौन तृप्ति जोशी मैडम जी हैं, मैं अपेक्षा करता हूं कि वो हमें सुन रही होंगी, अगर सुन रही होंगी तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि हमारे महाविद्यालय का कोई प्रोफेसर दूसरे प्रोफेसर की बात सुन रहा है और वो भी वैचारिक बातें सुन रहा है। तो विद्यार्थियों को हम रिसर्च सिखाते हैं, यहाँ पर भी पढ़े, मैं जहां बैठा हूं वहां पर 100-150 प्रोजेक्ट रखे हैं, वो विद्यार्थियों के द्वारा किए गए हैं। कभी कभी अकेला एक विद्यार्थी रिसर्च करता है, कभी कभार 4 विद्यार्थियों का समूह हम इकट्ठा करते हैं और उनसे रिसर्च करवा कर लेते हैं। कभी कभार क्या होता है, किसी एक शोधार्थी का एक पर्यवेक्षक होता है, यानी मार्गदर्शक होता है, कभी 2-3 मार्गदर्शक होते हैं, क्योंकि अलग अलग विषय होते हैं तो मार्गदर्शक अलग अलग होता है। तब जाकर एक शोधार्थी ने क्या करना चाहिए, अनेक विद्यार्थी इकट्ठे आके शोध करते हो, अनेक मार्गदर्शक हो, गाइड हो, तो सबके साथ आपको समन्वय संतुलन बिठाने की नैतिकता भी आपके भीतर होनी चाहिए। अतः शोध में संतुलन भी एक प्रकार की नैतिकता है। कभी कभार पीछे हटना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, निगलना पड़ता है, अपने गुस्से पर काबू रखना पड़ता है, संयमी होना पड़ता है, तभी जाकर संतुलन और समन्वय हम बिठा पाते हैं। ये एक बात आपके सामने मुझे रखना था, वो मैंने रखी। चौथी बात है ईमानदारी या विश्वासार्हता। अनुवाद रिसर्च करते समय या अनुसंधान करते समय शोधार्थी के पास विश्वसनीयता का होना बहुत जरूरी है, और दूसरी जिम्मेदारी का एहसास।
ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो है रिसर्च और पब्लिकेशन के अंतर्गत आपको ध्यान रखनी जरूरी है। अकाउंटेबल जिसको बोला जाता है, जिम्मेदार, उसके कार्य में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। ये 3-4 शब्द हैं जो हिंदी शब्द के लिए इंग्लिश शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो बड़े शब्द लगते हैं। इंग्लिश शब्द का उच्चारण हो गया तो समझ में आता है, लेकिन उसी के पैरेलल हिंदी शब्द का उच्चारण हो गया तो समझ में नहीं आता है। ऐसा होता है, कभी कभी सुने नहीं होते हैं। ये एक बात आप ध्यान में रखें, विश्वासार्हता या जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए अनुसंधान करते समय। क्योंकि 2004-05 इस शैक्षणिक वर्ष के अंतर्गत तब से लेकर 8 साल तक या 7 साल तक मैंने वो जिम्मेदारी का और विश्वासार्हता को पल पल जिया है। गाइड का आपके ऊपर विश्वास होना चाहिए, और जब विश्वास होगा तब जाकर गाइड को लगेगा कि नहीं यार ये जिम्मेदार व्यक्ति है। आपका उनके साथ व्यवहार कैसे है, इस व्यवहार से पता चलेगा कि ये बंदा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो कहां तक काम कर पाएगा, इसकी पहुंच कहां तक है, इसकी सोच क्या है, इसकी दृष्टि क्या है, ये गाइड को पता होनी चाहिए, होती है जब आप उनके साथ वैचारिक, बौद्धिक, सैद्धांतिक, व्यवहारिक, वस्तुनिष्ठ इन सभी बातों के संबंध में, अपने रिसर्च के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। तो ये 2 चीजें आपको प्रूव करके दिखानी है, विद्यार्थी को, शोधार्थी को अपने गाइड के सामने और अपने रिसर्च के द्वारा प्रूव करके दिखानी आवश्यक होती है। शोध कार्य करने का आपका तरीका विश्वसनीय होना चाहिए, उसमें जवाबदेही भी होनी चाहिए। अपने कार्य, अपने विवरण, अपने डेटा कलेक्शन करते हैं, अपने डेटा, अपनी स्थापना और अपने निष्कर्ष को प्रमाणित करने, और प्रमाणित करने के बाद अगर किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज की जाती है, अगर पर्यवेक्षक के द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है, या फिर प्रश्न किए जाते हैं, या उस पर उंगली उठाई जाती है, बहुत बार उंगली उठाई जाती है रिसर्च के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर उंगली उठाई जाती है, तो उसका जवाब देने के लिए भी आपके पास पर्याप्त अवकाश होना चाहिए। नहीं तो फिर कोई पूछ रहा है, बहुत बार होता है, मैंने अपने महाविद्यालय में रिसर्चर के वाइवा होते हुए मैंने देखा है। बहुत बार क्या होता है कि प्रेक्षक या सुनने वाले जो होते हैं, सुनने के लिए बैठे हुए होते हैं, पूरा समय, पूरा सेशन सुन लेते हैं, सुनने के बाद नोट भी निकालते हैं, नोट्स भी लिखते हैं कि बाबा इन्होंने क्या बोला, मुझे क्या पूछना है। लेकिन जब इधर से प्रश्न पूछ लेते हैं, प्रश्न पूछने के बाद बहुत बार भी इस प्रकार की बातें निकल के सामने आते, क्योंकि मुंबई विश्वविद्यालय में तो ऐसा वाइवा नहीं होता है। एक तो पूना विश्वविद्यालय में वाइवा होता है, नहीं तो आप हमारे यहाँ होता है, सीकेटी कॉलेज में होता है। लेकिन बहुत बार जो है समय के अभाव में प्रश्नों को हम नहीं लेते, और समय ज्यादा होने के कारण, कम होने के कारण प्रश्नों को तिलांजलि दे देते हैं और सिग्नेचर करके फिर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये पुणे विश्वविद्यालय के अंतर्गत 2-3 बार होते हुए मैं स्वयं विद्यार्थी जब था तब मैंने देखा, लेकिन तब समझ में नहीं आता था ये क्या हो रहा है, क्योंकि साक्षात्कार लेने वाला देरी से आता था, तो समय नहीं रहता था, फिर खाने का समय होता था दोपहर का, तो उस समय हमको तो खाना नहीं मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि युवा थे। लेकिन जो परीक्षक के रूप में आते थे उनकी तो उम्र हो गई थी, उनको समय पर खाना चाहिए। लेकिन आज हमको समझ रहा है कि समय पर खाना क्यों खाते हैं और क्यों जरूरी है। तो ये चीजें बहुत जरूरी होती है। पर्यवेक्षक के द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है, फिर प्रश्न किए जाते हैं, या उस पर उंगली उठाई जाती है, तो उसका जवाब देने के लिए भी आपके पास पर्याप्त अवकाश होना चाहिए। यदि ऐसा है तभी आपका शोध कार्य अकाउंटेबल कहलाया जाएगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। और यदि ऐसा नहीं है तो नैतिक धरातल पर, नैतिक स्तर पर कहीं ना कहीं अपने नियमों को तोड़ा है, आपने नियमों को तोड़ा है, नियमों
वायलेंट किया है, अतिक्रमण किया है या उसका उल्लंघन किया है, ये बात कभी भी छुप नहीं पाएगी। कितना भी छुपाओ, इस बात का शोधार्थी को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं जो करूंगा मुझे कोई नहीं देख रहा। ऐसा नहीं होता। एक बात अगर अच्छी होती है तो वो बाहर जाके कोई नहीं बोलेगा, लेकिन एक बात अगर गलत होती है तो एक व्यक्ति 10 लोगों को बताएगा और 10 लोग अनेक व्यक्तियों को बताएगा, वो फैल जाएगी। दूसरे दिन तक आपको डिग्री मिलते मिलते वो बात वहां तक पहुंच जाएगी, जो डिग्री देने वाला है आपको, वो उसके पास भी वो चीज चली जाएगी। अच्छी बातें नहीं जाती है, लेकिन निगेटिव बातें जो है हमेशा फैल जाती है। इसलिए इस निगेटिव बातों को फैलने से पहले इसको रोकने की जरूरत पड़ती है। और एक और महत्वपूर्ण बिंदु है जो शोध नैतिकता से ही जुड़ा हुआ है। प्रकाशन के ऊपर बात थोड़ी देर के बाद हम जरूर करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करनी है। शोध पत्रों, शोध पुस्तकों के प्रकाशन पर भी हमको बात करनी है। फिलहाल हम जो है शोध नैतिकता या अनुसंधान नैतिकता, रिसर्च इथिक्स पर ही केंद्रित रहेंगे थोड़ी देर के लिए। बाद में प्रकाशन के ऊपर जाएंगे, उसी पर एकाग्र रहेंगे। भेदभाव या पक्षपात का होना, और एक चीज मैं 5 नंबर वाली बता रहा हूं, भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। रिसर्च में, शोध में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए और उसे किसी भी तरह तोड़ मरोड़ कर चीजों को प्रस्तुत करना अपने दृष्टिकोण, अपने नजरिए, अपनी मान्यताओं को स्थापित करने के लिए परंपरा से प्राप्त की सर्वथा उपेक्षा कर देना चाहिए। ये एक चीज, इसके उदाहरण बहुत सारे हैं, लेकिन मैं उस उदाहरणों में जाके समय गंवाना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास अभी 10 मिनट रह गए हैं केवल, या 8 मिनट रह गए हैं। लेकिन मुझे अभी प्रकाशन की चीजें, प्रकाशन वाली चीजें आपके सामने मुझे रखना है, और थोड़ी वो भी संक्षिप्त 10 मिनट में वो बात आपके सामने रख के मैं आगे बढ़ने का कोशिश करूंगा। अब आते हैं शोध प्रकाशन के ऊपर। शोध प्रकाशन में मैं सबसे पहले बात ले लूंगा, बौद्धिक संपदा की चोरी नहीं करनी चाहिए प्रकाशन करते समय। बौद्धिक संपदा की चोरी, थोड़ी सी चर्चा में आपसे शोध नैतिकता के साथ साथ प्रकाशन की नैतिकता पर करने का प्रयास मैंने बोला कि करूंगा। इसमें पहली और महत्वपूर्ण बात है, किसी भी स्थिति में बौद्धिक संपदा की चोरी नहीं होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं इसको, रिसर्च को, अनुसंधान को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं, संपत्ति कहते हैं। मेरे पास संपत्ति है, संपत्ति के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और हम टैक्स भरते भी हैं, लेकिन इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कैसे लगेगा? कोई टैक्स कैसे ले लेगा? नहीं ले सकता। किसी व्यक्ति ने कोई प्रस्तावना की है, कोई शोध किया है, शोध कार्य किया है, कोई किताब लिखी है, किसी लेख का प्रकाशन किया है, शोधालेख उसने लिखा है, या किसी भी रूप में उसने अपने आप को स्वयं को संप्रेषित करने का प्रयास किया है किसी विचारों को लेकर, और आप उसकी सामग्री का बिना अनुमति के, बिगर संदर्भ दिए, सीमा से अधिक उपयोग करते हैं, तो आप मानकर चलिए कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्षति कर रहे हैं, हानि पहुंचा रहे, चोरी कर रहे हैं। ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ले लो, देखो, संदर्भ लेना चाहिए, संदर्भ देखना चाहिए, देखने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर देखा है तो वहां उसके नीचे दर्ज करो कि इस किताब को, इस पेज के ऊपर के संदर्भ को मैंने पढ़ा हुआ है। हमको लिखने में क्या हर्ज है? लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उसको अपनी संपत्ति समझ लेते, ये मेरा क्रिएटिव है ऐसा समझ लेते हैं। जिस प्रकार से घर है, पैसा है, इसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है, परंतु इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर आपको कोई टैक्स की देने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अदृश्य प्रॉपर्टी है।
उसके लिए कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, परंतु यदि आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो किसी न किसी रूप में उस पर आप एक प्रकार से भार अपना डाल रहे हैं, और आप ऐसा करके निर्भान तरीके से अपनी बात को टाल नहीं सकते हैं। शोधार्थी स्वयं जानता है कि उसका अपना कितना है, उसमें मौलिकता कितनी है, उसमें उसमें सामग्री वास्तव में कहां से प्राप्त की है उस शोधार्थी ने, अपने शोध कार्य में उसका किस प्रकार का उपयोग उसने किया, ये सब चीजें जानता है। चंगुकाना ठाकुर कॉलेज के ग्रंथालय से कितने किताबें ली है, कौन सी किताबें ली है, उसमें से कौन सी किताब का संदर्भ उसने लिया और कितना लिया है, सब जानता है। एक रखना चाहूंगा आपके सामने, शोध कार्य में पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, रिपीटेशन जिसको बोला जाता है। आजकल बौद्धिक संपदा और इससे संबंधित बातें बढ़ चढ़कर यदि की जा रही है तो उसके पीछे कारण यही है कि शोध कार्य में पुनरावृत्ति बहुत हो रही है, उसकी आवृत्ति हो रही है, रिपीटेशन बहुत हो रहा है। और ऐसी स्थिति में शोधार्थी की जिम्मेदारी शोध नैतिकता के संबंध में, अनुसंधान की मॉरलिटी के संदर्भ में और भी बढ़ जाती है। ये बात हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या है और क्या होनी चाहिए। तीसरी बात है गैर जवाबदारी। शोध क्षेत्र में गैर जवाबदारी की कोई जगह नहीं है। शोध कार्य अपने आप में जवाबदारी का नाम है। यदि आप ऐसा करते हैं, अब तक मैंने रिसर्च इथिक्स की चर्चा की, यदि उसका पालन नहीं किया, अनुपालन नहीं करते हैं, तो भीतर से आप कभी भी मुक्त नहीं रह पाएंगे, ये बात याद रखें, और आप दंड के भी भागीदार हो पाएंगे। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तो शोध नैतिकता को लेकर, प्रकाशन नैतिकता को लेकर बहुत से नियम भी बनाए गए हैं, कानून भी बनाए गए हैं, और आपको उसका पालन करना ही चाहिए। हर हाल में शोध नैतिकता भंग करने जैसी कोई कृत्य आपके हाथ से नहीं होना चाहिए, या ऐसी बातों से आपको दूर रहना चाहिए, तभी जाकर आपका मन प्रसन्न रहेगा। दिल खोल कर दूसरों से आप अपने रिसर्च के ऊपर बातें कर पाओगे, किसी से डर नहीं रहेगा, किसी के आगे आपको सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के हांजी हांजी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गैर जिम्मेदार तरीके से रिसर्च में काम करते हो, शोध कार्य की पुनरावृत्ति करते हो, तो आपको किसी की जिसके नजर में वो बात आएगी, उसको उसके सामने आपको नतमस्तक होना पड़ेगा, सब आपका उसको उसके अधीन करना पड़ेगा। ये बात त्रिकालाबादी सत्य है, आप ध्यान में रखें। चौथी बात है पूर्व प्रकाशन। प्रकाशन से पूर्व, आपका प्रकाशन यानी मेरा प्रकाशन, इसके पूर्व मैं जिस अनुसंधान, जिस विषय के ऊपर अनुसंधान कर रहा हूं या पेपर लिख रहा हूं, आर्टिकल लिख रहा हूं, और लिखने के बाद उसको मैं प्रकाशित करूंगा, तो इसी विषय को लेकर, इसी बात को लेकर, इसी एंगल को लेकर, और किसी ने तो इसके पहले, मेरे प्रकाशन से पहले तो किसी ने प्रकाशन नहीं किया या किया है, इस बात का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए। शोध पत्र प्रकाशन के लिए किसी एक जगह पर एक पत्र, एक जर्नल को भेजे और उसी लेख को किसी दूसरे पत्र में या दूसरे स्थान पर प्रकाशन हेतु ना भेजे। शोध पत्र में भी, या यहाँ तक आप शोध से संबंधित अपना एक भाग प्रकाशित करते हैं या कोई सामग्री प्रकाशित करते हैं, तो उसका आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि पूर्व प्रकाशन इसका नहीं है, तो ये ऐसा करना मेरे हाथ से गलती तो नहीं हो रही है। इस प्रकार की बातें आपको ध्यान में रखनी अवश्य है। 1 मिनट रह गया, लेकिन मेरे मित्र नवगरे सर जी से अनुरोध करते हुए मैं और 2 मिनट ज्यादा बढ़ाकर मांग कर लेने की कोशिश करूंगा, ताकि मैं अपनी बात भी कहूं और कहते कहते मेरे मन में कोई मलाल न रहे कि बाबा थोड़ी बात मेरी अधूरी रही। तो मैं 2 या 3 मिनट आपसे मांग कर लेता हूं और वो बात मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। 5वीं बात है, संदर्भ उचित दिए जाने चाहिए रिसर्च करते समय। चाहे आप आर्टिकल लिखो, चाहे आप पीएचडी का थीसिस लिखो,
या माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट लिखो या मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट लिखो या विद्यार्थियों से आप रिसर्च करवा कर ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन ये करते समय रिसर्चर को और मार्गदर्शक यानी निर्देशक जो है, गाइड जो है, उसको ये बात मालूम होनी चाहिए कि संदर्भ किस प्रकार से देना चाहिए, लिखना चाहिए। तो संदर्भ उचित और पर्याप्त दिए जाने चाहिए। 15 पेज आर्टिकल है, 10 पेज आर्टिकल है और संदर्भ ग्रंथ 2 हैं या 3 हैं, ये अपर्याप्त है। संदर्भ ग्रंथ वो हो तो हो, लेकिन पर्याप्त भी होने चाहिए। लगना चाहिए कि बाबा हाँ, इसने 4 किताबें पढ़ी है, 4 संदर्भ लिया और तब जाकर आर्टिकल लिखा है या कुछ लिखने की कोशिश की अपनी दृष्टि से। किसी भी स्थिति में किसी के विचार को अपना विचार बताकर या प्रकारांतर से प्रस्तुत करने की कुचेष्टा आपने कदापि नहीं करनी चाहिए। शोध प्रकाशन में मौलिकता बहुत महत्वपूर्ण तत्व है और गुण भी है। और मौलिकता के लिए सोच भी मौलिक हो, बुद्धि हो और ध्येय भी पवित्र हो। यह त्रिवेणी संगम यदि ये वहां हो सके, तभी शोध नैतिकता और शोध प्रकाशन को लेकर आपकी समझ प्रामाणिक हुई, ये विश्वास पूर्वक कहा जाएगा। अंतिम बात की तरफ मैं आने की कोशिश करता हूं और वो 6 नंबर वाली बात है, वो है विवेक की अंतिम नैतिकता। सब बातें मैंने बताई आपको, इथिक्स की बातें बताई, नैतिकता की बातें बताई, थोड़ी बताई, ज्यादा नहीं बताई समय अभाव के कारण। अनुसंधान की भी नैतिकता बताई, प्रकाशन की भी नैतिकता बताई। लेकिन ये सब देखने के बाद भी मैंने एक आखिरी हथियार आपको देने का कोशिश करने वाला, आखिरी इथिक्स देने की कोशिश करने वाला। बाकी कुछ नहीं जमा तो नहीं जमा, बाकी कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो आखिरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस बात का भी आपने अगर पालन किया तो भी आपका रिसर्च इथिक्स और प्रकाशन का इथिक्स का पालन किया जाएगा, ये निश्चित है। विवेक ही अंतिम नैतिकता है। प्रिय विद्यार्थियों, पीएचडी के शोधार्थियों और मेरे सहकर्मी प्राध्यापक वर्ग, हो सकता है हिंदी वाले भी कुछ, हिंदी साहित्य लिटरेचर वाले भी कोई हिंदी प्रेमी शोधार्थी हो, साहित्य के जिज्ञासुओं, मैनेजमेंट के विद्यार्थियों। अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुनिया में विवेक से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो, याद रखें, कोई शक्ति नहीं, विवेक से बढ़कर कोई गुरु भी नहीं है। इंसान के पास यदि विवेक है तो वह ज्ञान का, विद्या का आराधक भी हो सकता है और विद्यार्थी भी हो सकता है, ज्ञानी भी हो सकता है, मार्गदर्शक भी बन सकता है, लेकिन विवेक को छोड़ के नहीं। वास्तव में विवेक के दिए में ही ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित होती है। अतः विवेक ही हमें सत्य असत्य और सही गलत का बोध कराता है। देखा जाए तो विवेक ही अंतिम नैतिकता है, इसका पालन मैं हमेशा करूंगा। इसलिए मैं जब भी यहाँ भ्रमण करता हूँ, महाविद्यालय में भ्रमण करता हूँ, एक बार मुझसे काम नहीं हो गया तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार एक आर्टिकल मैंने लिखा नहीं लिखा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी ने मुझे वो काम क्यों नहीं हुआ इसके ऊपर बोला तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा विवेक जो है वो डगमगाना नहीं चाहिए। तो मैं इस माहौल के अंतर्गत भ्रमण करने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट, कोई परेशानी मुझे नहीं होती। इस प्रकार की परेशानी आपको भी नहीं होनी चाहिए। आपने भी इस विवेक का या नैतिकता का पालन जरूर अपने जीवन में करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। यहाँ जो प्रोफेसर, इनको मालूम होगा कि मैं भी किस प्रकार का जीवन यहाँ पर यापन करता हूँ या जीता हूँ। मुझे विश्वास है कि शोध नैतिकता, रिसर्च इथिक्स और प्रकाशन नैतिकता, पब्लिकेशन इथिक्स, यानी एक तरह से एटीट्यूड है। मैं भी एटीट्यूड में रहता हूं, एटीट्यूड है। हम रख सकते हैं उस एटीट्यूड को अपने पास, नजरिया रख सकते हैं, दृष्टिकोण रख सकते हैं। इसके प्रति पूरी तरह जागरूक रहकर, सजग रहकर, सचेत रहकर, दृढ़ निष्ठा और समर्पण के साथ अपना शोध कार्य संपन्न करेंगे, ऐसी मुझे जरूर अपेक्षा है। और अंततः
उसकी संतुष्टि के अधिकारी आप ही बनेंगे, मैं भी बनूंगा। आप सभी को मंगल आशा के साथ अनंत स्वास्थ्य की कामनाएं करता हूं और आपका जीवन पूरा की पूरा आपके रिसर्च के ऊपर केंद्रित रहे और रिसर्च जल्दी से जल्दी आपका जमा हो, ऐसे अपेक्षा करता हूं, कामना करता हूं। संक्षिप्त में क्यों न हो, मैंने अपनी बातें, अपना मत रिसर्च के ऊपर रिसर्च करने के बाद पहली बार रखने का प्रयास किया है। या नहीं आ गया होगा, आ गया होगा तो बोल दीजिए, आ गया होगा तो कह दीजिए कि सर आपको थोड़ी और जरा तैयारी करने की आवश्यकता है, ऐसा भी बोल दिया तो भी मेरे लिए बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहेगा। ऐसे मैं अपेक्षा करूंगा। नवघरे सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे या अपनी बातें रखने का रिसर्च इथिक्स और पब्लिकेशन इथिक्स के ऊपर अब यहाँ पर मैं अपने वक्तव्य का पूर्ण विराम देता हूँ। इस महाविद्यालय के प्राचार्य नवघरे सर और सभी मेरे सहकर्मियों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और अपने वक्तव्य को यही समाप्त कर देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नवघरे सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पार्टिसिपेंट आप सभी को पता चल गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट था भंडारे सर का टॉक। भले उन्होंने हिंदी में बात की हो, अंग्रेजी में नहीं की हो, लेकिन एक हमारे यहाँ पे ऐसे एक ही रिसोर्स पर्सन आपको मिलेंगे जो विदाउट पीपीटी घंटों बात कर सकते हैं, और वो भी जो स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा, जो स्पेसिफिक वर्डिंग रहेगी, उसके हिसाब से सर लेक्चर देने में माहिर है। तो हमें लगा कि बाबा भंडारे सर का लेक्चर होना चाहिए। पीएचडी के स्टूडेंट्स है, रिसर्च स्कॉलर के स्टूडेंट्स है। जिस तरीके से सर ने आप जो बातें बताई है सर आज अभी आपने, वो बहुत ही मायने रखते हैं आज के इस माहौल में। क्योंकि होता कैसे है कि हम रिसर्च तो करते हैं, लेकिन उसका आउटपुट खुद हमारे लिए है कि दूसरों के लिए है। हाँ। वो उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए पहली बात। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के लिए, क्योंकि हमें करना है पीएचडी करना है तो इंप्लीमेंट के लिए करना है, पीएचडी करना है तो प्रमोशन के लिए करना है, पीएचडी करना है तो मेरे डॉक्टर नाम के लिए करना है, और बाकी क्या है उसमें थीसिस में वो मुझे पता नहीं। तो आपका लेक्चर जो था वो आई ओपनिंग था, मतलब झटका देने वाला था थोड़ा सा। तो जो भी वो दूसरे रास्ते से जाने वाले थे उनको सीधा रास्ता दिखाने की आपने कोशिश बहुत अच्छी तरीके से की है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और वोट ऑफ थैंक्स के लिए हमारे डिपार्टमेंट से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट से नीलिमा मैडम है, वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ आप। Thank you, Navgare sir. I, Mrs. Nilima Tidar, a research scholar from Department of Microbiology, is here to propose vote of thanks for our today's resource person, Dr. U.T. Bandare sir. Just now, Navgare sir said this is the only faculty member in our college who can speak for hours and hours without any presentation. And really, sir, your session was very, very alarming. And without presentation, we enjoyed it for the entire 1 hour. On behalf of all the research scholars, as well as the organizing team, I thank you, Bandare sir, once again for being there with us for today for this wonderful session. Sir, you explained about the scientific conduct and various ethics which we need to follow during publication with simplicity and with ease. And really, sir, you explained this by giving various different forms of examples. Research, if it is done with proper ethics, it will really stand different from others. Research and ethics really are parallel and go parallel with one another. So whatever you said, sir, really we will implement it during our research conduct, and we will follow whatever guidelines that you have given during this entire session. So once again, I thank you on behalf of everyone. So thank you, sir. Thank you, madam. धन्यवाद मैडम. Thank you so much. Thank you so much, Bandare sir, Nilima madam. धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद. ओके. सर बहुत बढ़िया. धन्यवाद सर, धन्यवाद सर. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. धन्यवाद, धन्यवाद. So हमारे नेक्स्ट सेशन के रिसोर्स पर्सन है प्रोफेसर डॉक्टर गीता गढ़वी मैम. She is from sir, you can. सर मैं जाऊं फिर? Yes sir, thank you. Okay.
So हमारे our next session will be going to conducted by Professor Dr. Geeta ma'am. She is going to join the session soon. I just call her to join the session and deliver her talk. So we will wait for a minute, and once madam join, we will start the session. Please don't go anywhere. सर हेच लिंक राहील का दुसरी लिंक असेल? Same लगेच immediately आपण स्टार्ट करतोय. नवरे सर. हा आपण लगेच चालू नवरे करू. सर. आवाज येतोय माझा? ह्याच लिंकला जॉइन असेल का दुसरी लिंक असेल? याच लिंकला तुम्हाला येतोय. ओके ओके. So all are requested to fill the feedback form and attendance link. I have already shared the session 1 and session 2 feedback and attendance link in WhatsApp group also and in Zoom link also, chat box. Please check and fill all the feedback and attendance link. Okay, very good afternoon one and all. So we will start our session. For this session, we have resource person from University of Gujarat, Associate Professor Dr. Geeta Gadbi ma'am. I welcome you ma'am on behalf of CKT College and on behalf of all the participants. I wholeheartedly welcome you, and I introduce madam. So madam is from Library and Information Science Department, Gujarat University, Ahmedabad. Madam has more than 23 years of teaching experience with innovative methods. Madam invited for various guest lecture, expert talk, and subject expert from various professional bodies and Department of Library and Information Science of various universities. Madam also edited various books. She has written more than 26 research articles. She has also authored 2 books, and she has attended national and international conferences, seminar, and she guided more than 156 students preparing for information products and 69 students for research products. And at present, 9 student research scholars are working under her guidance. Her area of interest is LIS education, knowledge management, professional ethics, philosophy of Dr. Ramakant, who is a father of library and information science. And she loved to work for all around the development of the students, content analysis and writing for the future generations. During the lockdown period, she invited for 11 national and international webinars as an expert and panelist. She is graduate from SMDT University and did her PhD from Banstali Vidyapit, Jaipur. I once again welcome you, ma'am, for this session. And I am happy to share one thing that is not there in her profile. That is in my whole academic career, right from first 1 year to start this library science to till then 15 years career. I only met one person. She is always responding. Okay. No doubt. There is a busy schedule. There is a time limit. There is a night. There is a day.
Whenever we call the madam, madam always responding in a way, in such a way that she is waiting for our call. She is waiting to meet us. So this is the way that I have never seen like the person ma'am do. I really seriously, I appreciate that behavior, that attitude. We already discussed with our PhD group only that madam response is very well, and whenever we need help, we call the madam and madam always give us the supports. Thank you so much, madam, for that supports and cooperation. And Thank you. I request you to please start your session. Thank you. Thank you, Dr. Ramakant. I'll call you Dr. Ramakant because now you half of the way you have cleared. Thank you. So I can call you Dr. Ramakant, and the participants. Thanks for this wonderful introduction, and I congratulate you and your entire team to organize such a very good workshop for research scholars. It is very innovative. In innovative way, you have started this, and I must appreciate your way of teaching and way of sharing your knowledge with others. With these words, I would like to start my presentation. Please tell me, is it? You can share the screen. You can share the screen. Yeah. I make you co-host so you can able to share. Okay. Yes. Is it okay? Now it's shared. Yeah, it's visible. Fine. Is it okay now? Yes, ma'am. But I want this presenter view. Yeah, it's presented view only. Slideshow is live now. No, but within that side by side, I will get some notes also, na? So you have to stop this by slide view. Then only you can able to see. What can I do? Slideshow you have to stop. Okay, slideshow. Yeah. Otherwise you can't. This Zoom not allowing you to see the notes on live meeting. No. Then it is okay because it will not visible everybody, na? Yes. So I think this will be okay. Fine, no issue. Scientific misconduct is my topic, which is given to me by Dr. Ramakant and his team. So, falsification, fabrication, and plagiarism. This is the word which, being a researcher, we are used to heard, or we can say that we are used to listened also, right? So what is the way of conducting research, actual research, by means of authentication or by means of all these things? Why it is not coming? Hello? It's, Yes. it's Okay. moving. Okay. It's moving. Yes. Now it is moving. So first of all, being a library science student and being a library science professional, it is my prime duty to pay a tribute to Dr. Ranganathan, whom we considered as father of library science, librarianship also. His 5 laws of library science are very much in talk and very much famous. Because of Dr. Ranganathan, today we all are here, right? So we are earning our bread and butter because of Dr. Ranganathan, because he implemented librarianship in India very well, and due to his visionary actions, we all librarians are here. So he gave us 5 laws of library science, and with that 5 laws, it is books are for use. Every reader has his or her book. Every book is reader. Save the time of reader, and the library is growing organism. These are some of the
some laws he has given for librarianship to work according to these rules. It is our prime duty. So we all librarians are following him with good faith and with all respect also. So let us start with research. What is research? What do you mean by research? Research means collecting data, reviewing literature, previously done literature, or preserving data, or preserving books, or preserving our own publications, collaborating with people, or analyzing with data, or global perspectives. We have to be sharing our views globally, or any other topic, or any other thing is called research. But is it true that it is research? First of all, I would like to say that if your research is not useful for the society, for the development of society, then the research is waste of time, waste of money, and waste of energy. So make sure that your research must be useful for society, and it is for the upliftment of the society. So what you need to know about research misconduct? When we are talking about research misconduct, means what? Misconduct means what? Misbehavior? Yes, it is misbehavior also. Misconduct is not limited to publication issue, published research, or you can say that it is not only for publication. There is a professional you can contact to overcome for the research misconduct, or if you come across a misbehaved literature or misbehaved researcher, then you can come and contact to the professional who can solve your issue. Research misconduct affect everybody, whatever it may be. It may be a researcher itself, it may be a research institution, it may be mentor, it may be his collaborator, or his or her collaborator, or funding agency, or even his nation also. So be particular about your research and your behavior, research behavior also. Institutions have policies to protect all involved. Most of the institutions have their own research policy. They have designed the policy and they have uploaded it on their website also. So for that, we have to consult that website, or we have to observe that policy, and according to that policy, one has to follow the instructions. Anyone can report misconduct. Yes, anyone can report, because if it is not up to the mark, if there is some malpractices in research, or if there is some other issues, noticeable issues conducting the research, at that time one can report the misconduct to the authority, or to some extent your you can say your nation also, or your publication, your research review committee also. Then you can report research misconduct anonymously. Every time it is not necessary that you have to disclose your name. You can apply it, or you can complain the authority anonymously also. This is a Penn State University infograph, and within that infograph, they said that they have given their contact number and also the email address. So one should note, one should very much careful about misconduct of research. So what is research misconduct? Now come to the point. So research means, we say that invention, we say that
whatever is there, reinventing something, whatever is lying there. But at the same time, research will start with selecting the problem, selecting the right resources, selecting the right mentor, selecting the right audience, or selecting the right sample also for whom you are going to conduct the research. When we are talking about research misconduct, it is said that selective citing, selective plagiarism. Selective citing means what? If I am not very much comfortable with so-and-so person or so-and-so author, I will not citing him. That is selective citing. Or sometimes what happens, sometimes people are asking you that if you are writing this paper or writing this research, always cite my article. I came to know about one director of some or one well-known institution, and his every research is supposed to sign by him, and if the researcher have missed his citation, or his article is not cited anywhere, then he simply reject that article. Okay, so this is not this should not be happened. Okay, so what you have to do, you have to be very much neutral about citing the citations or citing the resources. Self-plagiarism. See, if I have written a paper on ethics, right? Then what can I do? I again write another paper, and 50% of that paper is reproduced in another paper. Then again some data is from there. I simply copy the text or copy the research work which was conducted by me, or which was already published by somebody else, but I am using that because it is my own work. So it is not that we should be very much careful about self-plagiarism also. Ethical misconduct, FPP, and conflict of interest, which are displayed in red. We will discuss later on that. False or malicious accusation means people are citing or people are writing something about their data or about their analysis. It is totally false. It is totally not there, but they are writing. Poor practicing data management is also practice or data management. Some years back, I have conducted one research and my data is there, and now I am trying to again writing a paper, and I use that data. That is also very bad habit. Poor practicing of publishing and authorship also. Sometimes what happen, people are asking some well-known author to be associated with that, because due to his presence or due to her presence, the paper will get more citation. People will use his or her paper very frequently. So that is not the practice, or we should avoid that type of practice also. We should not be a bias. Exaggeration is also not required. Hampering work of other researchers. See, they are not doing good, they have did this and that. It is not our cup of tea. We should not go to that extent, or we should not interfere others' work. Researcher must focus only on his or her research work, right? Misusing seniority, again, what I have said again previously is the same thing. Ignoring putative violations of RI. If we are not aware about research publication policy or research conducting policy of the institution or our society, then we should avoid writing, or we should avoid doing research. So what we have to do, we should follow with all means, and with wholeheartedly we have to involve in research work.
So here there is one rate within that bubble. We have got this ethical misconduct. Then again, conflict of interest and FPP. FPP is falsification, then false data and plagiarism. This ethical misconduct means what? What we all know, that what is ethics, what is right and what is wrong. How do we behave? How do we should not behave? All these things are ethically right and wrong things, right? But in research also we have to follow this type of things. In coming slide, I will explain about this all issues. Why do scientists manipulate data? Do you know why scientists are manipulating data? First is to prove a preconceived theory against lack of experimental evidence. Whatever is there, they try to again prove that this experiment or this theory is wrong and my theory is right, right? And second thing is this, to scoop a competitor lab on an unpublished discovery they made. Sometimes what happened, you know, if you somebody came to know about the research work some lab or some team is doing, and what they do, whatever the data they have collected, whatever the research they have done, some of the data stolen from there and using that data in their research work, and they can manipulate the data and they can produce their research work. But what happened, you know, when they caught, sometimes they are careless also, but some of them are not so much careless. They are very much serious about their career, very much serious about their social, you can say, reputation. So they will also try to avoid this type of data or this type of practice. So I think Dr. Ramakant told me that this workshop is for PhD students. Am I right or wrong? Yes, ma'am. Yes, it's for PhD Okay, fine. students. Fine. So first of all, how to start the research work? I think most of the participants, some of them have about to complete, some of them have are about to complete their research, some of them have just started the research. So let me start with this, how to start it. So junior scientists are often pressurized or bullied by their advisors. You know that scientists who are doing research work, their seniors said that if you can deliver this result, you will publish a nice paper, and and you will have very good job also. If you don't deliver this result, you will not publish any paper and have no job at all. So junior researchers, what they do, they follow the instruction and they start practicing this misconduct. Scientists occasionally help data to fit the theoretical model for a publication. Selective data acquisition is also there. Omission and critical control. Very commonly it is seen that omission of data or sometimes controlling the data. And adjustment. Adjustment means what? Manipulation of data. People are not aware about that, but sometimes it happens. We have seen that some of the institutions or some countries are publishing a lot of research work. How they are doing this? I don't want to say, or I don't want to index anybody, but the thing is that he somewhere
they are malpracticing, they are following malpracticing or manipulating the data also. Data falsification means frauding data or following the fraud data or providing others false data or frauding some other things is also seen while you are doing research work. Sometimes scientists or sometimes the researcher recycle the data by him or by himself or herself. They recycle the data and they manipulate the data according the result they are expecting, right? So it should not be there. Second thing is that the paper mill. What is paper mill? China took over in scientific research output. We all know that China is producing a lot number of research. Much of this research is unreliable or outright fraudulent. How it is outright fraudulent? With this picture, I would like to explain it. A lot is fabricated outright by third-party contracts. That is paper mills. Means they are you can say they are conducting this type of paper mills. Means people are writing for other and they will publish the data. They will collect the data by themselves and they publish the paper also. In this picture, you can see that one lady is taking the order, and what they are the scientists are sitting there and they are asking that we will take the herbal soup with nanoparticles on cancer cells, impact factor over 3, please. Means this is a paper mill or this is a contractual lady who is writing for these 4 people, and 4 people have their own choice and they are asking for favoring this thing, right? So unnatural selection of research or misconduct is also highly seen in this paper mills. High competitive environment polluted by bad science undermines productivity, motivation, and work normal. People leave or cheat. Sometimes what happens? People are cheated also. Dishonest mentors procreated by appointing dishonest mentees into faculty job also. So what happened? The vicious cycle is going on and on and on. And journals and funding agencies prefer simplistic but sensational data and breakthrough the science. So which type of data or which type of research journal are asking? So they are asking for microbiome or artificial intelligence, stem cells, means regenerative medicine, or organs from lab. This type of research they are asking. Translational or commercial potentials, or just something totally crazy, that is arsenic bacteria or something like that. So for this reason, the misconduct or malpractices are started. So the problem of secrecy is also created, and the problem of complexity is also created. When it comes to the problem of secrecy, what happened? A meta-analysis of surveys on research misconduct found that almost 2% of the investigators surveyed admitted to fabricated or falsifying data at least once. If you survey the entire community, scientist community or researcher community, you will find that
2% are said are committed that we have did this type of falsification. When asked about the behavior of their colleague, approximately 14% reported observing a case. Means they are not doing that much, but their colleague are doing these things. That is the reason why people should avoid to be in misconduct or malpracticing, right? The problem of complexity said that wrongdoing in research is complex in at least two important ways. First is wrongdoing in research takes many different forms. Authors identified variables that correlated with more forms of wrongdoing. One lesson learned was that wrongdoing is not a homogeneous phenomena. It is not homogeneous phenomena. Different kinds of wrongdoing are associated with different variables. Thus, it is misleading to speak to organizational deviances or professional misbehavior, as though it is a unified phenomena. And everywhere it is seen that people are manipulating data or people are doing wrongdoing things. Some reason concern personality trait also. Mumford and her co-authors find that sense of self-esteem, entitlements, and cynicism have been associated with poor ethical decision making. Other explanations concern individual psychological responses to environmental factors also. For example, several studies have found that stress are also threat are also misleading or wrongdoing to the research. So containing manipulated data means what? Correction, retraction, and nothing. Means when we are submitting our paper or we are submitting our data to our research to publication or somewhere else, at that time what happened? Correction are suggested. Rarely, not every time, but sometimes it's suggested corrections. How to represent the data, how to analyze the data, and this is wrong and this is right. And this type of things are suggested. Then what we are doing or what authors are doing, retraction. Again, it is rarely done. Okay, then what happened? Nothing. I'm reviewing two or three, I think, yeah. 3 journals I'm reviewing articles. And one of the journal, I always suggest that this is required to modify, this is required to eliminate, this is required to clarify, and these things. And also I am writing that journal that looking to your reputation, this article must be rewritten, right? But the journal is always overlooking this and they are publishing the article as it is received, right? So what happened? It is waste of energy of experts also and waste of energy of others also. So every paper on its own merit, academia loves to give second chance to fraudulenters. It shows tolerance and openness also, but not to whistleblowers who report frauds. Those who are frauding or those who are conducting fraud research, it should not be promoted anywhere. So understanding research misconduct, one survey was conducted and 120 cases of professional wrongdoing was
reviewed. At that time, falsification of and fabrication of data is found. Contamination of scientific literature is also found. Waste funds hampers medical and technological development is also hamper, or we can say that whatever fund is received by the researcher or by the research team, it is also waste, and plagiarism deprives authors and of credit for their work also. So it is very much in the interest of research, good research, we should avoid this type of things. Why do investigators engage in research misconduct? Anybody has idea about this? Why they are engaged in misconduct, this type of research, or they are doing this research? So first is secrecy, and second is problem of complexity. It is already spelled out. Environmental factor is there, stress is there, cognitive overload and exposure to stressful life, and feeling unfairly treated by system. Sometimes what happens, people are afraid about the treatment given by the system or given by the peers also. So they are scared about the unfairly treatment given to them. So according to Davis, culture may play a role in research misconduct. Cultural norms inculcated in one's nation of birth or training may contribute to behavior that is deviant. Every time we don't know about the culture where from the people or researchers are coming, but the thing is that the environmental factor is more important for the research behavior. Environmental factors that predict wrongdoing in research is playing conflict professional roles. So we are conflicting roles, professional conflicting roles are also senior and junior are also reparted, or we can say that the research provoking attitude is also changed by the professionals. Having financial rewards for wrongdoing, sometimes it happens that they are doing whatever the research they are conducting, but they are having their financial rewards so that they are encouraged and they are doing wrong research or wrongdoings. Others benefiting from wrongdoing. If you are working somewhere and you have seen that this people or that guy is getting benefit after doing this much of wrongdoings, though they are getting benefited, so let me do also. This type of attitude is also developed by the for the researcher, and being penalized for following the rules. Sometimes what happens, if you are following the rules and you may be penalized, or you may be people are treated you as you have done something wrong. So in this way, people are encouraged to follow the wrongdoings. Others being penalized for doing what is right. It is the thing that people are whatever they are doing, they are getting benefited. So people are also following this type of attitude. Unjust treatment of employees or unfair processes are also seen. Ambiguous legal and ethical norms are followed, though they are getting benefits. Vulnerable victims are also there. Oversight failures, people are oversighting failures, occupying a position of authority over peers.
So if you are doing wrongdoing and your paper is published, your research is get noticed, then you will get the position in your peers also. So this type of things are also seen by wrongdoing in research. All these 10 factors can be understood as contributing motive, means, or opportunity, or you can say combination thereof for wrongdoing in research. David Resnick and other authors have contributed an article in Research Accountability, Policies and Quality Assurance, an online journal entitled Research Misconduct Definitions Adopted by US Research Institution, where authors evaluated 183 misconduct policies of US research institutions and coded them in 13 different types of behavior mentioned in the misconduct definition. They found that more than half, means 59% of the institutions in the sample has misconduct policies that went beyond the federal standard. Other than FPP, that is falsification, then all these things, the most common behaviors included in definitions where other serious deviations is 45%, significant or material violations or regulations are 23%, misuse of confidential information is seen 16%, misconduct related to research is 14.8%, unethical authorship other than plagiarism is again 14.2%, other deception involving data manipulation is 13.1%, and misappropriation of property or theft is seen 10.4%. So in this way, the federal definition is of misconduct is fabrication, falsification, or plagiarism in processing, performing, or reviewing research, or in reporting research results. This definition focuses on only 3 types of unethical behavior. First is fabrication, second is falsification, and third is plagiarism. That's why it is called FFP. So first is fabrication of data, then second is falsification of data, then plagiarism is also there. Other serious deviation is also practiced, and in this way people are also doing wrongdoing while conducting the research. Significant violation of regulation, law, or policy pertaining to human subject, animal research, biosafety, radiation safety, and other areas are also kept aside. Misappropriate of fund is also seen. Misappropriation of property and destruction or theft is also seen. Unethical authorship practice other than plagiarism is also seen. So in this way, the unethical practices, or you can say the misconduct of research is seen. A critical issue in deciding whether research misconduct should be subject to criminal law, its definition, because not all behavior labeled as research misconduct qualifies as research as serious research crime, but assuming that all FPP, that is falsification and this is fraud, and all non-FPP not is far from obvious. In addition, new research misbehavior have recently been described, such as prolific authorship and fake peer review, or boosted, such as duplication of images. This also seen in some of the cases. We have seen this paper mill in China. In this way, people are conducting research.
Few countries have or plan to introduce independent bodies to address research misconduct. So far, the coming years, most universities and research institutions will continue handling alleged research misconduct cases with their own procedures. A global operationalization of research misconduct with clear boundaries and clear criteria would be helpful. In most countries, research misbehavior are subject to codes of conduct and allegations are looked into by committee of scientists. One may wonder whether this is better or worse than a legal approach. They form a committee of scientists, and it is decided by the scientists that this research is misconducted or this research is appreciated. The law defines research misconduct as fabrication, falsification, and plagiarism committed willfully or gross negligent in planning, performing, or reporting of research. Fabrication means undisclosed construction of data or substitution with factitious data. Falsification means manipulation of research material, equipment, or process, as well as changing or omitting data or result, making the research misleading. And plagiarism means appropriation of others' ideas, processes, results, texts, or specific terms without rightful crediting. So when you are conducting research and you are citing somebody else's research at that time, don't forget about the citation. Without citation, you can't do the research work correctly, right? In 1992, the USA, the National Academy of Science, defined research misconduct as fabrication, making up data or result. Falsification means changing data or results, and plagiarism means using ideas or words of other person without giving appropriate credit. So FFP in proposing, performing, or research reporting. Other type of misconduct such as unethical authorship or publication practices and conflicts of interest, mismanagement, and other 11 unethical behaviors were also included in the definition of a research misconduct in national policies. Netherlands has the Code of Conduct for Research Integrity. National Health and Medical Research Council, Australia, has their own policy. In this way, and then European Code includes a number of examples of other unacceptable practices, such as manipulation of authorship, withholding research results, or exaggerating the importance and practical applicability of findings. This type of work is done by other countries also. So other stakeholders have defined research misconduct in various ways. The Council of Science Editors added mistreatment of research participants to the classical FPP. The International Committee on Journal Medical Editors added the purposeful failure to disclose conflict of interest of FTP, especially designed for surveys. Anderson and other authors considered 22 actions of research misconduct and grouped them in 6 categories. That is data, methods, policy, outside influence, credit, and cutting corners. Kuroki proposed a new classification of research misconduct, considering its social consequences with the class 1, class 2, and all these things. Misconduct undermines integrity, trust, credibility of research both within the scientific community and the public also.
So with these words, let us examine the misconduct, how it is practiced. How common is research misconduct? As of May 2012, there were 2047 retracted articles in PubMed. Most of the retractions, that is 67%, were for misconduct, that is 53% for FPP and 14% for duplication. Since 1975, the percentage of retracted papers has increased tenfold. The retraction watch databases, the largest of its kind, currently includes more than 18,500 retracted articles. A recent analysis of 10,500 papers up to 2016 showed that 0.04% of papers are retracted. The annual rate of retraction is about 1,000. The rate of increase is slowing down since 2012, and 43% of the 946 papers retracted in 2014 were due to FPP. It should be acknowledged that retraction does not necessarily mean that the researcher has committed research misconduct. In some 50% of retraction notice, FPP was implicated and other types of misbehave accounted for an additional 10%. The retraction watch database hosted 4,898 medical articles retracted up to December 2018, usually for more than one reason. In 759, that is 16% articles with fabrication or falsification of data, images or results were involved. In 16%, any type of plagiarism. 1% retractions had serious issues with participants' informed consent, and 184 had no research ethics committee approved. So this type of misconduct has started. Now, let us see research misconduct or research fraud. Back in 1995, Malcolm Pierce was removed from the British Medical Register for publishing 2 fraudulent papers based on fabricated data. This has happened everywhere. You must not, what you can say, you must not exaggerate that this is done. Yeah, it is there. In 2000, research misconduct started to be considered as a criminal offense, which is not different from financial fraud because resources are misused in both instances, and the investigation to be conducted is more aligned to policy procedures than to those of academia. The misconduct is a euphemism for fraud and the fact that the policy could do a better job than academia in alleged cases of research misconduct was also discussed 13 years later. But apart from a number of articles that argue the commentators' opposite points of view, not much has fundamentally changed. Self-regulation is the dominant way to handle allegations of research misconduct all over the world, often with an explicit view of optimized opportunities for learning and prevention. University should decide policy and also try to strictly follow this policy so that people are not encouraged to
do this type of misconduct or this type of research work. Few countries have or plan to introduce bodies to address research misconduct that are independent from research institutions and universities. So, research misconduct means, what is that? They are how much falsification? 0.3%, and plagiarism 1.3%. Circumvention of certain minor aspects of human subject requirements is 7.6%, and change or design methodology or results of a study in response to pressure from a funding source is 15.5%. In this way, systematic review of 21 surveys, 18 in the meta-analysis observed that falsification and fabrication is almost 14%. Other questionable practices are 72%. When asked to the researchers, they admitted that falsification and fabrication is only 2%. Researchers are admitted about this, and 34% out of 72, only 34% have admitted that we have done this type of work. 22 observed and admitted research misbehaviors surveyed to biomedical and researchers from academia. That is, number is 617, and industry are only 100. In this survey, it is found that falsification and fabrication was done by 16% from academia and 12% from industry, and plagiarism is also done by academia is 34%, and by industry it is very high, and it is 51%. So in this way, people are conducting this type of things. At the same time, what happened? Duplication of images are also found. And after visual screening of more than 20,000 images in these papers, I have mentioned that 617 plus 100 means almost 717 papers are observed, and it is found that 20,000 images published in 40 journals during the study. It was concluded that 3.8% of articles containing problematic images, with at least half of them exhibiting features suggestive of deliberate manipulation. It is seen that they have manipulated this image. In one top scientific journal, they found that 51, that is 6.1% of 960 papers containing inappropriately duplicated images, and 5.5 images were retracted among these papers. As per Economic Times report, the global research output, as measured by peer-reviewed science and engineering journals, articles, and conference papers, grew about 4% annually over the last 10 years. As per the statistic compiled by the US National Science Foundation, that is NSF, the number of scientific papers published worldwide increased from 17,55,850 in 2008 to 25,55,959 in 2018. Means 10 years. The gap is only 10 years. Among the 15 largest publication producers, countries with higher than average growth rate includes South Korea,
Brazil, China, Russia, India, and Iran. South Korea has 4%, Brazil has 5%, China stacked 8%, Russia contributed 11%, and India again contributed 11%. Iran is also at 11% rate of contribution. So statistical analysis of biostatistician researchers often made inappropriate requests regarding the analysis of their data. Most severe inappropriate requests were to interpret the statistical findings on the basis of expectations, not actual results. This is seen everywhere. 30% ignore violation of assumption that would change results from positive to negative. When is 29. Remove or alter some data records to better support the research hypothesis is 24%. Not report and presence of the key missing data that might bias the results is 24%. Means people are doing this type of misconduct or this type of you can say malpractices for doing the research or for acknowledging the research as a best result or as a worth for academia. Fake review process is also done. A journal retracted 107 papers in single note. This problem is of such magnitude that the Committee on Publication Ethics, that is COPE, has issued brand new guidelines on publication process manipulation, that is COPE 2018, and paper may be written and submitted by ignoring such guidelines. Many articles, even I'm educator of this PhD thesis, I have seen that there are a number of research are simply conducted to cope up with the hypothesis they have made or the objective they have made, and they try to justify that they have conducted very good research and many or data, a number of data is covered. This type of research are ultimately harmful for the society also. So in this way, we should try to ignore all this type of practice. And what to do if I come to know about the research misconduct? So first of all, what you have to do, your supervisor or co-supervisor, you have to report them, or you bring their notice that this or that guy is doing this type of research, or in this research paper, I have come across this type of wrongdoing. Or you can contact your principal investigator, those who are with you, or with that paper or with that publication, so that you will come to know that what exactly. You can also contact your head of the unit or research integrity officer. You can contact that also. Remaining silent is not an option. The long-term consequences of research misconduct can be serious negative impact on the society. So, good communication is key to resolving concerns and issues, and ensure that due process is followed where an investigation is warranted. So, it is our duty, our prime duty, to do all these things, right? I have already covered these things. So let us start with criteria of good scientific research or science research. First is systematic
then methodological, and third one is scientific. So the research developed, implemented, and reported in a systematic manner. One should not take a shortcut, or one should not go beyond the limit also. So we have to conduct research systematically, then methodological, adopt and use skillfully and the research method, because research method is the fundamental of your research work. So appropriate research method is also used. At the same time, material, apparatus, tools, whatever is there is also selected according to your research work. Then scientific, the research should be scientifically sound through utilization scientific approaches, tools and techniques. No shortcuts are allowed, or no shortcuts will be should be seen in your research work. Pardon me. Hello. Continue, ma'am. You can continue. Okay. Up to what time I have to continue? Time is up to 4 p.m. only. Yeah. So you can. Okay, fine. Only 2-3 slides are remaining. Yes, I'll complete very yes. soon. Okay. So criteria for good ethics or criteria for good research ethics is what? So social and scientific value should be added, or we should look at the social value or scientific value of our research. Scientific validity is also seen, or we have to examine the validity of scientific way. And fair subject selection is also there. Favorable risk benefit of ratio is same. Independent review, informed consent, and respect for the potential and enrolled subjects. These things should be or will be included in your research work or in your behavior. So how to maintain research ethics is a thing. Before conducting your research, or then during conducting the research, and after research. This is given here, and the slide will remain with you. So I'm not going in detail with this. What are the ethical norms? Most people learn at home. In our childhood, we have seen that this is wrong and this is right, right? So we should follow this type of rules. Most people learn at home, school, or social settings. Moral development occurs throughout the life. Ethical norms are so ubiquitous that one might be tempted to regard them as simple common sense. On the other hand, if morality were nothing more than common sense, then why are there so many ethical disputes and issues in our society? It is a question, and we have to answer this question, right? What we have to follow? Honesty, objectivity, integrity, carefulness, openness, respect for intellectual property, confidentiality, responsible publication, and responsible to mentoring also. This is the way we can conduct our research, and with all ethical way, we can use our resources, our mentor, and all the community of research should be conducted like this. Okay. I think there is no time for question answer. Right? Participant can ask if they have any question. Yeah, okay, fine, no problem. 5 minutes we can give it to them. Okay. If there is any question, you can ask. Otherwise, we will go for the vote of thanks. Okay. So on behalf of our college, I would like to thank you so much for this wonderful session. And very short notice, you have accepted our invitation and being with us from your busy schedule. I know that there are the unlimited activities are simultaneously going at your end, and right. you are with us. That is the most what we can say, that it's
gift for us for today's session you have conducted. And now for propose the vote of thanks, I would like to invite Manisha Samant madam, who is the Okay. research scholar from Gujarat University only, and madam is the guide of Manisha Samant madam. So I request Manisha ma'am to please propose vote of thanks. Very good, very good. Manisha is also there. Yes. Yeah, madam. Okay, okay. Nice to see you. Thank you, ma'am. Good afternoon to one and all. I am Manisha Saman, working as a librarian in BPCS. I am audible? Yes, yes, purely audible. Yeah, I am Manisha Saman, working as a librarian in BPCS College of Physical Education, Vadala, Mumbai. It's my privilege to propose the vote of thanks to Madam Dr. Geeta Gadvi, Head Department of Library and Information Science, Gujarat University. I am happy to share that I am a student of Dr. Geeta Gadvi madam, and under her valuable guidance, I am pursuing my PhD work. Thank you. Thank you, ma'am. Madam, you have shared a valuable thoughts on the topic scientific conduct. Madam explained how the scientific misconduct can it. Hello. Yes. Yeah. Madam has discussed about how the scientific misconduct, how the scientists are manipulating the data. Madam has also stressed upon the topic of plagiarism, data manipulation, data falsification, and also discussed the various concepts of how the researcher should avoid the misconduct. The session was very informative and useful for the researchers, faculty members, and also new PhD aspirants. I once again thank Dr. Geeta Gadvi madam for taking time from her busy schedule and guided us. On the behalf of CKT College, I also thank Dr. S.K. Patil sir, Principal sir, IQAC team, and Mr. Ramakant Navgare, librarian of CKT College, for arranging such a wonderful webinar of this national level workshop on publication and research ethics. And I also thank CKT. Mute कर दिया. You are not audible, ma'am. Mute कर दिया. Manisha, you have muted yourself. Hello. Manisha ma'am, you are not audible. Yes. Yes. Now, yeah. Thank you, sir. Good, good. No, Wish you all the best to all participants. yeah. Thank you so much, ma'am. Once again, thank you so much. Okay. Thank you. Thank you, madam. Pleasure to hear you. Yeah, thank you. So participant, I have already shared with you the feedback and attendance link. Kindly go through that link and fill the feedback and attendance. It is mandatory to all of you. And today we have finished today's session, all the sessions. So tomorrow we will start our session from 9:30 a.m. only. Please remember, tomorrow the busy schedule we have from 9:30 to 7:30. So be ready for tomorrow, because from tomorrow onwards we will have the practical sessions. For 2 days we have only theoretical session, but from tomorrow onwards it will going to be happen in such a way that you have to attend all the sessions and you have to do the practice work. Okay, so we will meet you all of you tomorrow by 9:30 a.m. only. Yeah, thank you so much, ma'am. Geeta ma'am. Thank you. Thank you. Shall I? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. Okay, 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 fine.